Good morning, students. Now, the next topic of your MSME is concept of technology. Technology may be defined as an expertise, equipment, or a procedure used by organization to transform resources input into output. Basically, technology play a very important role in SMME to decide their success. Technology generally considered as a product design, production technique that they are using, quality assurance measurement, human resource development or management system. Basically, in technology, the small scale industries they focus on technology because they are not so have they don't have so much financial resources, so the choose of technology, a selection of technology is very crucial part for them. They have to adopt a technology which can be used for a long time, which is not so expensive because they don't have such resources, and same time they that technology help them to fight the competition in the market. That's why the concept of technology is important for them. Basically, the need of technology is us to it specific the specific level of technology advancement is highly desirable to ensure economic growth. कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं वो आपके आगे के इकोनॉमिक ग्रोथ को भी डिसाइड कर रही है. इट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर लेबर कैपिटल एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो. It also help in creation of skill, new means or method of production, or new use of raw material, or you can widespread the use of machinery also. If you have chosen a technology which is very right, you can give a variety to the customer. With a small technology, with a less expensive technology, you are able to give them. If you use or if you choose a right technology at the right time, it is a most powerful mean of wresting a power from nature in shaping a different input also. सो द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है, किस टेक्नोलॉजी को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चूजन इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट. क्योंकि एक बार आपने जो टेक्नोलॉजी चूज़ कर ली, ये भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह है जिसमें आप लोग बाय बैक नहीं हो पाते. इट बिकम वेरी कॉस्टली फॉर यू टू कम आउट विद दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट because it need a commitment of financial resources, it commitment of other resources of the organization also. So you have to take a proper decision, very thoroughly you have to investigate कि आपकी mistake ना हो for choosing a technology. Now the choice of technology is important, most important decision from the accelerated development point of view. So entrepreneurs should take this decision very seriously and carefully. If an entrepreneur has committed mistake in selection of technology, the only result is a failure of planning as well as lack of confidence towards the planning. So as to accelerate the pace of economy and the enterprise concern is directly related with the choice of technology. We have two type of technology. One is your labor intensive and second is your capital intensive technique. In labor intensive technique, it use comparatively large amount of labor, a small dose of capital. In this technique, a large amount of labor is combined with a smaller amount of capital. Thus, it rely more on labor input, less on capital input. In this way, the labor intensive technique depend most on the labor factor as compared to capital factor. It also encourage the manpower skill as well as a capital formation. The main advantage and disadvantage of labor intensive technology is it help in increasing the employment opportunity. It help in effective utilization of capital. You can decentralize the production systems also. You can equally distribute the income
and high level of production is also possible here, and creation of economic and social endowment is there, and saving of foreign exchange is there. If we have a labor intensive technology, we can save our foreign exchange also. We can distribute or equally distribute the income level. We can uplift the employment opportunities also, so the standard of living of the human resource can be increased. Then limitations of labor intensive technique, दे आर स्टैटिक एंड शॉर्ट टर्म इन नेचर, क्योंकि लेबर जो होता है वो इतनी स्पीड से काम नहीं कर सकता जितनी स्पीड से आपकी मशीन्स काम करती हैं. दैट्स वाई. एंड दे प्रोवाइड द स्कोप ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन आपका इतना हाई लेवल में नहीं हो सकता है. आप देखेंगे जैसे कार मैन्युफैक्चर हो रही है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल कार. अगर आप उसका लीड टाइम देखेंगे, वी कैन मैन्युफैक्चर अ कार विद इन अ 30 minutes, बट विद द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट. ओके. एंड इस वजह से हमारे कैपिटल फॉर्मेशंस का जो रेट है वो भी लो हो जाता है. एंड दे फेल टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ मैन पावर ऑल्सो समटाइम. देन वी हैव अ capital intensive technique. Capital intensive technique may be defined as that technique in which comparatively large amount of capital is used but a small number of labor. Under this technique, amount of capital required per unit of production is very large in comparison of labor intensive technique. It uses more volume of input on capital rather than your input in labor. Thus, capital intensive technique prefer more unit of capital, less unit of labor and give due emphasis on mechanized process of production. Means यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप मैकेनिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेशंस यूज़ कर रहे हैं फॉर योर प्रोडक्शन वर्क. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज इट हेल्प रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि स्पीड अप हो गया आपका प्रोडक्शन इससे. लेटेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम्स यू आर यूजिंग, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल. यू कैन डू अ मास प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस. Improvement in your standard of living also, because the profit margin is also go high. Strategic effect है आपका. It help in creation of economic and social endowment also. It help in increasing the employment opportunities also. Then limitations. It exploit labor workforce as well as consumers. It divides society into two parts, haves and have not, rich and poor. जो rich हैं वो और ज़्यादा rich होते हैं, जो poor हैं और ज़्यादा poor हो सकते हैं because of capital intensive technology. ये लेबर वर्क को एक्सप्लॉइट कर रहा है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है. मीन्स जो आपने बनाया है, क्योंकि आप बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यू आर फोर्स टू टेक दैट. ठीक है, आपको क्योंकि सारी चीज़ें मशीन से हो रही हैं, तो लेबर वर्कफोर्स भी एक्सप्लॉइट हो रहा है. उसकी वजह से आप उससे कहते हैं कि नहीं, आप इतने में ही काम करिए, अदरवाइज हमारे पास मशीन्स हैं. क्योंकि यहाँ पर क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज तो हो रही है, बट the employment opportunity increase for those who have that particular skill. Who don't have that mechanical skill, for them labor intensive technology is good. It avoid a balanced regional development, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री सेटअप है वहीं पर लोग हैं, वहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है. ओके. इट encourage a wasteful use of capital resources also sometime. So we have to check where it is suitable, where is the capital intensive technique is suitable, where is the labor intensive technique is suitable. If you have a resources, human resource who have low in skill, who don't know how to use computer, how we can employ them in a capital intensive technique where we are using a robotics. So it is very important to see that what type of resources you are having, human resources you are having. Accordingly that we need to check कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है. एंड सेम टाइम वी हैव टू फाइट द कंपटीशन. तो आपको कंपटीशन को भी चेक करना है, आपके कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करना है कि व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग. अकॉर्डिंगली यू आर डिसाइडिंग द टेक्नोलॉजी दैट इज suitable for you. Then types of production technology. We have 3 types of production technology basically. One is your unit or small batch technology. Then another is a mass production and a large batch technology.
Next is your continuous flow process technology. In case of unit or small batch technology, it is a type of technology in which products are produced to customer specification or produced in a small quantities by skilled technicians like job shop and all. They are using a general purpose machines for their production. They are highly skilled. And mass production or a large batch production refers to types of technology in which products are manufactured in large quantity, offer offer on an assembly line. This more complex type of technology is used by Maruti Udyog Limited, etc. Then we have a continuous flow process technology. It is a type of technology in which products are manufactured through in interrupted series like chemicals, refinery companies and all, where production is continuous for 24 hours. Okay, now you have to see कि आपका प्रोडक्शन रेट क्या है, डिमांड रेट क्या है. अकॉर्डिंगली यू विल चूज़ कि मुझे जो है स्मॉल बैचेस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है और आई हैव टू यूज़ लार्ज बैच टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन, और आई हैव टू गो फॉर द कंटिन्यूस और फ्लो प्रोसेस टेक्नोलॉजी. ओके, then these are the factor determining choice of technique which help us before choosing a right technique. Now the factors. First is the government policy which affect your choice of technique also. गवर्नमेंट पॉलिसी समटाइम्स आप देखेंगे कि आप जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम फोकस कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हम फोकस कर रहे हैं, तो दैट पॉलिसी ऑल्सो गाइड अस बिफोर चूजिंग अ टेक्निक कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें. जैसे माना पहले हम लोग यूज़ करते थे फॉर मेल्टिंग प्लास्टिक. आपकी जैसे सिंटेक्स की टंकी आती है पानी की, ओवरहेड वाटर टैंक्स जो आप बना रहे हैं, आपको उसको मेल्ट करने के लिए, मोल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, कोल और यूज़ करते थे. But nowadays you are using electricity, so that pollution reduce. So government policies also determine कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें. Then prevailing factor in domains कि आप के पास ऐसा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो बहुत ज़्यादा है, you are gifted with that particular factor. Accordingly you will decide. Means अगर आपके पास cheap labor बहुत available है तो you go for a labor intensive technology. If you don't have a labor like US economy, वहाँ लेबर नहीं है तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करेंगे दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल. बट इन इंडिया इफ़ यू यूज़ अ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी दैट बिकम वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉर आवर सोसाइटी. देन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी लेवल कि आपका टेक्नोलॉजी लेवल कैसा है, अभी आपके कॉम्पिटिटर्स आप के आसपास किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन सी लेवल में है, और उसके अकॉर्डिंग यू आर यूजिंग. वरना आपका कॉम्पिटिटर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ कर रहा है बट आप कह रहे हैं हम मैनुअल जाएंगे, तो यू कैन नॉट फाइट द कॉम्पिटिशन. तो यू हैव टू यूज़ अ सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक मशीन्स. ओके, देन अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्स कितना अवेलेबल है. इफ़ यू हैव अ ह्यूज रिसोर्स यू कैन गो फॉर द कैपिटल. इफ़ यू डोंट हैव ह्यूज रिसोर्स यू गो फॉर द लेबर इंटेंसिव, यू कैन से. And based on available resource you can decide what type of production technology. मीन्स आप बैचेस में बनाएंगे, स्मॉल क्वांटिटी में बनाएंगे. द साइज इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दैट, यू कैन से कि हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन करेंगे. देन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, किस तरीके के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, किस तरह के आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास उस प्रोफेशनल्स किस टाइप के हैं. क्या आपने हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी तो आपने इम्प्लीमेंट कर दी बट आपको उसको रन करने के लिए टेक्निकल्स नहीं मिल रहे, ठीक है, इसके लेबर नहीं मिल रहा है, तो इट नॉट पॉसिबल फॉर यू टू इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर कंसिडर इन डिटेल वेल डिसाइडिंग द टेक्निक और टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. क्लियर. नाउ द लास्ट टॉपिक of your syllabus is marketing strategies for small business. देखिए, in case of small business the marketing techniques are somewhat different because they don't have that much of resources. They are limited in marketing budget. Okay, you have to maximize this marketing budget while still competing with a large companies.
for their target audience attention. Marketing, when you don't have a big budget, can be challenging, but there are plenty of small business owner can do attract and maintain a customer base. The rising of digital marketing concept, you can say, digital marketing has made it all the easier for small business owner to find a way to create a presence and attract an informed buyer. Before business start marketing a product, it helps to create a buyer persona whom you want to reach with your promotional material. Once you have a ideal customer, you will have a wide choice of marketing methods. So here you will use a guerrilla marketing technique, low cost, no cost tactics, you can say. You are trying to focus on those areas where nobody is focusing. Okay, and you are trying to make your market base from there. You may use a different ones at a different stage of your business cycle. It is not necessary you will use the same type of strategy at all your stage of business cycle. You may utilize them all at once from your business inception. Also, when you build a business, the first thing you want to secure is a customer base. With a decent printer or phone or internet connective device, you can put together a fairly extensive advertisement campaign without having to pay for a space. These are certain marketing strategies that small businessman can use or MSME can use in nowadays. Like you can use a flyer distribution door to door. आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स में जो है फ्लायर्स दिलवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यू डोंट हैव अ लार्ज बेस कि आप अपने लार्ज जो बड़े आपके बिग राइवल्स हैं उनको फेस कर सकें. तो दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक. देन यू कैन प्लेस पोस्टर्स स्ट्रैटेजिकली. जहाँ आपका कस्टमर बेस ज़्यादा है वहाँ आप अपने पोस्टर्स जो है अट्रैक्टिव पोस्टर्स को पेश कर सकते हैं. यू कैन यूज़ अ फॉलो अप टेक्निक ऑल्सो. आपने जो है ऐड दिया, उसके बाद आपने फॉलो अप लिया, री का काम वो कर रहा है. आपके माइंड में जो है वो इमेज क्रिएट कर रहा है कि यस एक ये प्रोडक्ट है. और इवन यू कैन डू अ कोल्ड कॉल ऑल्सो, बिकॉज कोल्ड कॉल्स जो होती है 20% तक इफेक्टिव होती हैं. आपके अगर आपने 100 कॉल्स करी तो 20 उसमें से मैच्योर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. तो कोल्ड कॉल ऑल्सो हेल्प अस. देन वैल्यू एडिशन सर्विसेज, लाइक आपने किसी को डिस्काउंट दिया, फ्रीबीज दी, रिपीटेटिव कस्टमर्स आपके पास आएंगे और यू आर अ बिग बून वंस बिजनेस इज अप एंड रनिंग. आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे आपके पिथौरागढ़ में ही बाजार इंडिया एक करके एक स्टोर खुला था स्टार्टिंग में ही, ठीक है. अब आप देखेंगे उसका बेस कितना बड़ा हो गया है. दे यूज़ अ वैल्यू एडिशन सर्विसेज, डिस्काउंट्स की. आपने जो है 5000 का ख़रीदा तो आपको जो है 500 का ये सामान फ्री मिलेगा या आपको ये डिस्काउंट मिलेगा. तो इससे कि फ्रीबीज भी आप यूज़ करते हैं. देन यू कैन यूज़ अ रेफरल टेक्निक. आप कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रेफरल सिस्टम आज की डेट में बहुत चल रहा है, ठीक है. देन यू हैव अ डिजिटल मार्केटिंग. आप ट्रेडिशनल वेबसाइट्स और सोशल मीडियाज़ जो हैं उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें. तो आपने ईमेल में जो है पॉपअप दे दिया या आपने गूगल सर्च में दे दिया कि आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है, या आपने फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज़ किया अपने प्रोडक्ट के बारे में, या व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं. ऑल कम्स अंडर दिस. ओके. तो also if your job involve going to the customer, make sure to slip a flyer into nearby mailbox. And also people of similar need or interest tend to live in the same area. That will also help to get the advantage of your marketing. Clear? And whatever I have told you, this is all written here. Okay, you can use this technique. And creative ideas is also there to create a marketing or to create a customer base, but it depends on the location, the type of customer you have, the knowledge level of the customer you have. Clear? So
This is all about your entrepreneurship subject. If you have any problem, you can contact me. Okay, students? Thank you.